2008 में I met Anup and Panvel some get together. So I didn't know if it was coincidence or destiny, but there were so many things similar that we connected instantaneously. How we met with an accident at the same road with the same car, maybe just a couple of years apart. My speed was high. I was driving. Coincidentally, अनूप का भी एक्सीडेंट 2003 में हुआ था सेम स्पॉट पे. सेम इनफैक्ट कार भी सेम था हम लोग दोनों का. जैन कार सेम स्पॉट पे. डिफरेंस ये था कि उसका 2003 में हुआ था, मेरा 2005 में हुआ. तो आप कोइंसिडेंस बोलो या डेस्टिनी बोलो, जो भी बोलो. आई थिंक हाँ, ऑर्कुट पे मिले, ऑर्कुट बंद हो गया. फिर फार्मविल फेसबुक था, फार्मविल चालू किया खेलना. उस पर हम लोग दोनों कंपटीशन लगा रहे थे किसका केस ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड ऑल. तो यूज्ड टू डू चीटिंग एंड ऑल. आई वॉज इन हॉस्पिटल में एवरी थर्सडे वो आता था. और हॉस्पिटल में ये सब अलाउ नहीं करता ना, बाहर का फूड एंड ऑल. तो बिकॉज ऑफ हिज व्हील चेयर वो कुछ भी किधर भी डाल कर है ना, पिज़्ज़ा एंड ऑल हॉस्पिटल में लेकर आता था. हम लोग रात को 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 बजे तक, जब तक वो उसके घर पे दूध वाला नहीं आता था ना, तब तक जब तक बेल नहीं बजता था तब तक हम लोग बैठ के बातें करते थे. फर्स्ट मैसेज आई थिंक मेरे एंड से आई लव यू नहीं था. फर्स्ट मैसेज मेरा ये था, आई लव यू, आई लाइक यू. अच्छा, आई लव यू नहीं, 2 दिन के बाद था. Initially, when we decided to speak to our families, she being from a typical Orthodox Gujarati family and me being from a South Indian family, we were culturally apart, and it was very difficult to explain that we and wheelchairs could manage with each other with all our differences. मैं घर पे बोल दिया था कि दिस इज द थिंग, आई डोंट नो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसा है. बट उसके बाद आई थिंक वी वेंट स्लोली लाइक प्लानिंग करते करते हम लोग को 7 साल निकल गए. घर वालों को कन्विंस करते करते हम लोग का इंडिपेंडेंस लेवल बढ़ाते. So when we decided to get married in December, and we wanted to plan a trip alone, just the two of us. But then I used to never travel. So for traveling, I used to search online, search the market here in Bombay for a accessible, very friendly shower chair. One of my friends mentioned from this foundation that there's a company called Arcatron which is working towards building a shower chair which is self-propelled, which you can carry whenever we travel. And I got in touch with Arcatron team, and they told me that the product is launching in Feb. I said okay, but my honeymoon is in December. They were more than helpful, and they were more excited that we both were on a wheelchair and we wanted something product which would help us, and that's when Fredo came to our rescue. Today we have the chair from the wedding day. They have provided it to us, and I have used it at a couple of hotels. I've traveled with it. I bought it now home. Now it's here with us, and now in a day or two we'll be moving to Kerala, and we will be taking it with us.